everyone. Let's solve this question. This is also a question from geometric progression. एठी भी हमको फाइंड आउट करिवार अछि सम ऑफ सीरीज. अच्छा हमरा सीरीज कोन अछि 999 999 9999 up to 100 टर्म पर्यंत हमर ई सीरीज रो सम फाइंड आउट करिवार अछि. अच्छा क्वेश्चन पे हमारा फर्स्ट टर्म 9. अच्छा नेक्स्ट हमको कोन दरकार ना कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो हमारा फाइंड आउट केमती करंती ना सेकंड टर्म सेम आसी कि हम चेक करबा. सेम आसीले जाई के हम जानिबा जे एटा गोटे जेनेटिक प्रोग्रेशन रो क्वेश्चन. सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म केते आसी देखो. सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 11. अच्छा नेक्स्ट थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म. थर्ड टर्म इज योर. अच्छा एटा को थोड़ा सिंपलीफाई करिबा तो ये हमरो 11 आसीबो नाही. ये हमरो आसीबो केते 101. तो हमर एटी कॉमन रेशियो सेम आसुनी. तो ये क्वेश्चन हमरो जीपी रे नाही बट क्वेश्चन रे कोन अछि ना हमरो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रो क्वेश्चन बट एटी हमरो कॉमन रेशियो सेम नाही. अब हमें सेम करिबा फाइंड आउट करिबा भीतर अछि डायरेक्ट नाही बट इनडायरेक्ट वे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अछि. बस हम तब सॉल्व करिबा तो हम टिके ये करू छी. अच्छा 9 का हम कौन लिखि करिबा ना 10 minus 1. अच्छा 99 का हम कौन लिखि करिबा ना 100 minus 1. अच्छा 999 का हम कौन लिखि करिबा ना 1000 minus 1 plus dot 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 300. अच्छा सबुथुरी मु 10 एटा दुईटा पार्ट रे डिवाइड करू छी. गोटे पार्ट है 10 plus 100 plus 1000 plus dot 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 300 plus. अच्छा आउटे पार्ट कोन आसीबो ना देखो सब टर्म है तमरो -1 -1 -1 अछि. तो एति केतरा टर्म अछि हमर 100 टर्म माने हमर एठी माइनस जदि हम ऐड करिबा तो तार वैल्यू केते आसीबो ना -100. अच्छा एबे देखो ए जो क्वेश्चन ता हमर अछि एटा बट हमर जीपी रे अछि काहे कि ना एटी कॉमन रेशियो कोन अछि ना हमर फर्स्ट टर्म अछि 10 और कॉमन रेशियो केते अछि ना 10. देखो तुम सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म करिवो तो तुमको कॉमन रेशियो सेम मिलिबो और आ जेतो -100. अच्छा आर वैल्यू हमें फार्मूला जानि चंती. जीपी रो फार्मूला कोन एसएन रो फार्मूला a whole into r to the power n minus 1 divided by r minus 1. ए फार्मूला में केता बडे यूज करिबा ना जेतो बडे r टा मोर ग्रेटर देन 1 थि और ए सीरीज रे r रो वैल्यू ग्रेटर देन 1 अछि. सेति पे हम ए फार्मूला यूज करू छी. एठी a रो वैल्यू केता अछि ना 10 whole into r to the power n. अच्छा r रो वैल्यू वाला 10 और n है नंबर ऑफ टर्म्स. n है हमरो कोन ना नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स ए क्वेश्चन रे केते अछि ना 100. अच्छा हमर एटी पावर केते हिजबो ना 100 minus 1 divided by 10 minus 1 that is equal to 9. एटा हमरो ए पार्ट रो सम मिली गला. आ सहित हमको माइनस करिवार अछि -100. बस हमें टिके एटा को टिके इरेज करू छी एबे. अच्छा बस एटा को हमको सॉल्व करिवार अछि. हम ऑप्शन अनुसार को ऑप्शन ता हमको सैटिस्फाई करू छी. आको बस टिके सॉल्व करिवार अछि. अच्छा देखो
आपको मु डिवाइडेड बाय 1 लिखि परिबी तो ए दिटा टर्म रो देखो हमें 9 एलसीएम नहीं परिबा। अच्छा 9 एलसीएम ने टर्म टा केते होची 10 टू द पावर 100 माइनस 1। अच्छा एटा हमर केते हे जीवो 9 मल्टीप्लिकेशन हे जीवो 900। अच्छा आपको टिके सिंपलीफाई करले कोनी ऑप्शन देखिले ना एटा मोर मैच होनी ऑप्शन से त कोनी सिंपलीफाई करले देखो एटा कोन हे जीवो आसे तो मल्टीप्लिकेशन हे जीवो बेस सेम अछि पावर कोन हे जाय ना ऐड हे जाय 10 टू द पावर 101। अच्छा कोनी अगेन 10 माइनस 1 माइनस 10 माइनस 900 डिवाइडेड बाय 9। तुमको अब आंसर मिल सरी बनी 10 टू द पावर 101 minus 10 minus 900 that is equal to minus 910 divided by 9। अब इटा हमर फर्स्ट ऑप्शन से तो मैच होची। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10 to the power 101 minus 910 divided by 9। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पाई।